ओके स्पीकर ऑन अछि गुड इवनिंग जय जगन्नाथ जय श्रीराम देवज्योति अर्चिता प्रीति ज्योत्सना ऑडियो वीडियो सब क्लियर टिके खाली कंफर्म करो कि ऑडियो वीडियो सब ठीक ठाक अछि देन हमें स्टार्ट करिया आज लाइव क्वेश्चन ऑडियो हेलो 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 हैप्पी इवनिंग दीप्सा कान्हा प्रिंस सागर शिवानी देवज्योति ओके तब 35 वाचिंग 32 50 हबो तो संग संग स्टार्ट करिया बाकी तमर रहिला इंफॉर्मेशन तो दैट इज तमे सब फॉर्म बी तो सब फिल अप कर सारथिबो एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सारथिबो बाकी जो मानकर जो स्लॉट से माने से स्लॉट रे पहुंचबो रिक्वायर्ड टाइम जोटा तम थिबो 1.5 घंटा पूर्व रिपोर्टिंग टाइम तो ट्राई करियो कि यू शुड ट्राई टू रीच द एग्जामिनेशन हॉल ऑन द टाइम दैट इज रिपोर्टिंग टाइम रे ही तम पहुंचेर अछि गुड इवनिंग एंड क्वेश्चन दैट इज तुम बहुत फास्ट रे जीवा पड़िबो से रिगार्डिंग में तुम वीडियो उठा आसुची काहे कि ना तुमको 200 टा क्वेश्चन को 120 मिनिट रे करियर अछि तो बहुत फास्ट जीवार अछि कौन सी क्वेश्चन रे स्टिकी एक रहयार नहीं दैट इज एग्जामिनर सबले पय ट्राई करिवो 5 टा 6 टा सहज क्वेश्चन पचारि कि गोटे डिफिकल्ट क्वेश्चन पचारिया पय जोतरे कि से ट्राई करिवो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन रे लास्टेड होछि 15 देबज्योति ट्राई करिवो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन रे पिला को मु एटी कैप्चर कर रखि देबी कि 2 मिनिट तो 2 मिनिट रखि देले भाबिलो तुम जदी गोटे क्वेश्चन को 1 मिनिट लेखा नउचो तापर भी 200 क्वेश्चन रे पहुंच परिबोनी गोटे क्वेश्चन 1 मिनिट ले 120 टा मिनिट 120 मिनिट रे 120 टा क्वेश्चन बंद पहुंचो 200 क्वेश्चन रे पहुंच परिबोनी तो निहात रूपे से तुम ट्राई करिवो 100% कि से पिला को हमें स्टिकी करी रखिबू 5-6 टा क्वेश्चन इजी गोटे डिफिकल्ट 5-6 टा इजी गोटे डिफिकल्ट मु 2-3 टा एकाथरे मिसी डिफिकल्ट तमरो दैट इज तुम डाउन करिया पय तो सेही अनुसार मेंटली प्रिपेयर करिया पड़िवो कि कोन तुमको करिया पड़िवो आ केते स्पीड जीवा पड़िवो बहुत फास्ट जीवार अछि तुमको हैला जम्मा भी को क्वेश्चन रे स्टिकी हे कि रहिबोनी गोटिए जिंस स्किप करिया छाडिया शिक्षा दरकार हैला नॉन लाइन बहुत इजी क्वेश्चन आगु थिबो जोटी कि तमे टाइम हो नथिबो तम पाखरे फॉर्म बी पय कोनोसी पैसा नाही प्रियंका फ्री ऑफ कॉस्ट रे फॉर्म बी तमे अप्लाई करिवो एंड फॉर्म बी रे तमरो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी रो मार्क ही तम दबा पड़िवो जो मानकर मैथ नाही मैथ छाडिवो जो मानकर बायोलॉजी अछि माने बायोलॉजी रो मार्क दबो किछि पैसा नाही एंड इजीली तमे ताको फॉर्म बी फिल अप करि परिबो जदी कोनोसी पिला फॉर्म बी फिल अप करिनो तो ता रिगार्डिंग रे ऑलरेडी वीडियो अपलोड करछि तो स्टेप बाय स्टेप देखो एंड करो जदी निजे करिया को प्रॉब्लम होउची सो दैट जो पाखो जो तमरो थिबो नेट दुकान हेरिका थिबो सेठी जाई कि नले कर दियो हला एंड परफेक्टली करिवो ठीक ठाक करिवो बस एंड पॉजिटिव रहो जा हबो देखा जीवो सब पे नेगेटिव हबो ठीक नहीं पॉजिटिव रखे सर मो पीसीएम जो मानकर पीसीएम भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सब प्रिंस सागर सर मोबाइल रे करि परिबो यस 100% मोबाइल रे करि परिबो ताकि स्टेप बाय स्टेप करिवो ऑनलाइन साइबर कैफे रे करिवो तमो इच्छा मोबाइल रे जदी करि परिबो कर दो आराम से वीडियो भी अपलोड हेछि जो विद्यासागर क्लासेस जीवो वीडियो सेक्शन भी देखि परिबो हला मुरली सर तुमको डिटेल्स कहि दिछंती दैट इज को स्टेप बाय स्टेप रे प्रोसीजर करा जीवो तो से अनुसार तुम जेके अपलोड करियो हां केवल 12th मार्क हला केवल 12 मार्क ना प्रिंस दुकान रे करले भी फ्री खाली दुकान ता चार्जेस नबो 40-50 टका ना 12th मार्क दरकार की 100% 12th मार्क ही तुम अप्लाई करिवो 11th मार्क जमा दरकार पड़िबो ने 10th और 12th रे ही तुम फिल अप करिया पड़िबो हला हो चलो सर 10th रे 86 पर ओनली पीसीबी मार्क काउंट हो ना तमरो पीसीबी आ पीसीएम दीटा भीतर जोटा तमरो हाईएस्ट मार्क थिबो सेटा ही तुम काउंट करा जीवो हला तुम एतो फिजिक्स रो थ्योरी मार्क केते प्रैक्टिकल केते केमिस्ट्री थ्योरी केते प्रैक्टिकल केते बॉटनी रो
थ्योरी केते प्रैक्टिकल केते जूलॉजी रो थ्योरी केते प्रैक्टिकल के सब देला परे तुमर जोटा हाईएस्ट मार्क सेटा ही देबो। तो चलो स्टार्ट करिवा। ओके फर्स्ट क्वेश्चन तुम पाखरे अछि क्वेश्चन देखो व्हाइट रिवोल्यूशन ग्रीन रिवोल्यूशन ब्लू रिवोल्यूशन एंड वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एंड द स्वीट क्वेश्चन जदी कहले चलिवो व्हाइट रिवोल्यूशन कोन पे हेतिला एंड ग्रीन रिवोल्यूशन फॉर व्हाट एंड ब्लू रिवोल्यूशन फॉर व्हाट कोन होबो कोन पाई ग्रीन रिवोल्यूशन करा हेतिला लिपिका आंसर परफेक्ट। व्हाइट रिवोल्यूशन धोला रिवोल्यूशन कोन पे हेतिला मिल्क का कलर इज व्हाइट सो दैट A1 ग्रीन रिवोल्यूशन इज फॉर क्रॉप आमे भाबो कि जो हमर एग्रीकल्चर टा ग्रीन टाइप रो ग्रीनी सो दैट ग्रीन रिवोल्यूशन फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन एंड ब्लू रिवोल्यूशन फॉर द फिश A1 B2 C3 परफेक्ट। एट मते को कि सिल्वर टा कोन पे हेतला सिल्वर रिवोल्यूशन फॉर व्हाट हु कैन से सिल्वर रिवोल्यूशन कोन पे करा हेतला 12th रे कम अछि जदी 50% ऊपर को अछि ताले पक्का 100% एग परफेक्ट सिल्वर रिवोल्यूशन फॉर एग बढ़िया अछि समस्त का आंसर परफेक्ट। तापर मते को हां ठीक अछि सिल्वर रिवोल्यूशन होला देन व्हाट रेड रिवोल्यूशन आई थिंक थिला रेड रिवोल्यूशन फॉर व्हाट रेड रिवोल्यूशन सिल्वर फॉर एग परफेक्ट जो मीट पाई को रिवोल्यूशन रेड रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू आई थिंक मीट प्रोडक्शन बोधे ओके अर्चिता कौन हबो रेड रिवोल्यूशन फॉर मीट ओके टोमेटो बाय रेड फॉर टोमेटो एंड मीट आल्सो इंक्रीज द टोमेटो एंड मीट परफेक्ट मन रखिबो चलो तापर जीवा aquaculture मीन कोन प्रोडक्शन ऑफ aquatic animal प्रोडक्शन ऑफ aquatic plant ना बोथ A एंड B aquaculture माने कोन आंसर दियो जो माने फिशरी रिलेटेड इंटरेस्टेड अछो आफ्टर योर एग्रीकल्चर बा आफ्टर योर एग्जामिनेशन दोज हु आर इंटरेस्टेड फॉर फिशरी तो से माने आंसर दियो कोन हबो जो माने फिशरी पढिबे तो से माने को नियात जाने दरकार aquaculture मींस कोन both A and B aquaculture माने production of aquatic animal and also production of aquatic plant so both A and B what is fishery मते को कि जनरली जो माने फिशरीज पढिबे बा फिशरी रे केवल कोन माछ चाष करा जाय ओनली फिश ना प्रॉन ना क्रुस्टासियंस ना मोलस्का ऑल ना ओनली एंड ओनली फिश केवल माछ चाष करिया ना प्रॉन चिंगुडी चाष करिया क्रुस्टासियंस करिबा ना मोलस्का करिबा ना केवल एंड केवल माछ चाष कोन आंसर फिश प्रॉन मोलस्का हैला माछ चाष सहित चिंगुडी क्रुस्टासियंस ये सब को दैट इज सब जीव फिश अंडर हैला ऑल परफेक्ट एंसेंट्रल लाइनिंग सो सब जीव फिशरी अंडर रे देन साइकल्चर कोन व्हाट इज साइकल्चर बा पिसिकल्चर बोली कहि परिबो फॉर व्हाट पिसिकल्चर फॉर व्हाट कोन हबो आंसर दियो पिसिकल्चर रे कोन हबो ओनली फिश परफेक्ट दैट इज पिसिकल्चर रे ओनली फिश एपिकल्चर रे एपिकल्चर फॉर व्हाट ओनली फिश हैला पिसिकल्चर ओनली फिश aquaculture रे दैट इज aquatic plant and animal and fishery रे फिश हबो प्रॉन हबो मोलस्का हबो ए सब दैट इज हनी बी एंड हनी बी चाष करिया पूर्वरु हमकु फास्ट जानिया पड़िबो व्हाट इज द परफेक्ट हैबिटेट फॉर हनी बी रो परफेक्ट हैबिटेट कोन एंड दैट इज सेमान को हनी बी को तमे केमिति तांकर महू को कलेक्शन करिवो केमिति सेमान को केयर नबो को एनवायरनमेंट रे बंची परिवो दीज आइडियाज नियत रहया दरकार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा aquaculture गला तापरे इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन व्हाट इज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कोन आंसर दियो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन ओनली हनी बी इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन
mating of animals within the same breed, superior male of one breed mated with the superior female of another breed. Now male and female animals two different related species कौन हबो interspecific hybridization. Option D interspecific hybridization. Related species C होची आंसर not D. देखो C होची आंसर हां जो मानकर आंसर C that is perfect. C is the perfect answer. जनरली हम जानि छे inbreeding. What is inbreeding? Inbreeding कौन आंसर दियो. Inbreeding होची जनरली सेम ब्रीड भितरे जदि तमे मेटिंग कराउछ सेम ब्रीड माने फॉर एग्जांपल गोटे नेलो डोगरमैन गोटे ब्रीड यदि डोगरमैन ब्रीड रो से डोगरमैन भितरे तमे मेटिंग कराउछ बा ब्रीडिंग कराउछ दैट इज इनब्रीडिंग. सेमती आउटब्रीडिंग कोन आउटब्रीडिंग टू टाइप्स गोटे होचे आउट क्रॉस अनदर वन इज क्रॉस ब्रीडिंग. आउट क्रॉस कोन आउट क्रॉस होची दैट इज सेम ब्रीड बट नो कॉमन एंसेस्टर. कौन सेम ब्रीड नो कॉमन एंसेस्टर कहबे. देन जे क्रॉस ब्रीडिंग कोन डिफरेंट ब्रीड भितरे करिवो डिफरेंट ब्रीड भितरे मीटिंग करिवो. तो दैट इज इनब्रीडिंग होची सेम ब्रीड भितरे तो मीटिंग करे. फॉर एग्जांपल तमे गोटे नेलो डोगरमैन गोटे ब्रीड नेलो किंबा अल्सिशियन नियो जदि से डोगरमैन ब्रीड भितरे तमे खाली ब्रीडिंग करोचो सेही तार भितरे ब्रीडिंग करो दैट इज इनब्रीडिंग. एंड जदि अल्सिशियन नेचो केवल अल्सिशियन भितरे ब्रीड करोचो दैट इज इनब्रीडिंग रो एग्जांपल. सेम दैट इज जो देखिबा हमें ये हला इनब्रीडिंग आउ इनब्रीडिंग. देन आउटब्रीडिंग टू टाइप्स गोटे इज आउट क्रॉस एंड अनदर इज क्रॉस ब्रीडिंग. आउट क्रॉस कोन सेम ब्रीड बट नो कॉमन एंसेस्टर. सेम ब्रीड नो कॉमन एंसेस्टर माने कोन दैट इज माने ए दि जनकर एंसेस्टर समान होय दरकार. सेही डोगरमैन रो पेरेंट्स बा सेही डोगरमैन रो कॉमन एंसेस्टर ए डोगरमैन रो कॉमन एंसेस्टर चेंज हेतिवा दरकार. फॉर एग्जांपल गोटे गां रे डोगरमैन अछथि सेही गां रो डोगरमैन भितर जदि करछो दैट इज इनब्रीडिंग. एंड जदि गां टा चेंज करछो सेही डोगरमैन बट गां चेंज करछो ए गां रो डोगरमैन सो अन्य गां रो डोगरमैन सो तम ब्रीड करछो दैट इज आउट क्रॉस. अब टोटल जदि ब्रीड ही चेंज करछो जो डोगरमैन सह अल्सिशियन रो ब्रीड करछो दैट इज कॉल्ड एज आउट ब्रीडिंग हैला. एंड परफेक्ट अंकिता सेमती इंटर स्पेसिफिक होची टोटली पर स्पीशीज को ही चेंज करबा. मते को कि व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग. एनीवन हु कैन से क्रॉस ब्रीडिंग रो एग्जांपल. क्रॉस ब्रीडिंग बा टोटल पर में ब्रीड चेंज करिया. एग्जांपल कोन को इस्राडेल मन थिबो. इस्राडेल जनरली गोटे शीप ता ए शीप को जनरली दीटा ब्रीड द्वारा ही बना जाइतला. एंड दीटा ब्रीड होची कोन बिकेनेरी यूएस एंड मेरिनो राम्स मन थिबो. आई थिंक तमरो बिकेनेरी यूएस एंड मेरिनो राम्स दीटा ब्रीड रे तयारी कराइतला हिस्राडेल जोटा की ओटे होची कोन ना क्रॉस ब्रीडिंग रो एग्जांपल. परफेक्ट हिस्राडेल. म्यूल टा गोटे क्रॉस ब्रीडिंग रो एग्जांपल नुह. म्यूल टा गोटे इंटर स्पेसिफिक रो एग्जांपल. इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन रो एग्जांपल होची म्यूल. म्यूल टा जनरली दीटा स्पीशीज ही पर चेंज करा जाउची. कोन स्पीशीज गोटे स्पीशीज होची जदी हम देखिबा गोटे होची दैट इज म्यूल टा होची मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स. मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स भीतर जो ब्रीड करछो दैट इज कॉल्ड एज म्यूल हैला. तो जनरली टोटली पर स्पीशीज को टेच करछो मेल डोंकी फीमेल हॉर्स. ओके. एक्स लाइगर टाइगर प्लस लायन दैट इज लाइगर. ओके. लाइगर भी गोटे मूवी थिला आई थिंक. ठीक अछि. तो इंटर स्पेसिफिक आउट क्रॉस कोन क्रॉस ब्रीडिंग कोन. चलो नेक्स्ट जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. 90 क्वेश्चन को चलो को स्टेटमेंट ता जनरली करेक्ट अछि. बी wax is a byproduct of honey. Honey bees are the potent pollinator. Honey is a food of high nutritional value. Na all of the above. कौन अब आंसर बढ़िया. कान्ना दीपांजलि प्रताप वॉइस ऑफ कृष्ण शुभलक्ष्मी सरोज. ओके दैट इज आंसर समथिंग ऑल ऑफ द अबव हैला.
मते को कि जनरली इट गोटे क्वेश्चन जेहेतु पोलिनेटर आसुची अबायोटिक पोलिनेशन एंड बायोटिक पोलिनेशन मते को कि अबायोटिक एंड बायोटिक भितर जनरली को पोलिनेशन रो फ्लावर गुडा को कलरफुल हेतिबे एंड फ्रेग्रेंट शो करथिबे बा भलो वासना होतिबो कोन बो फ्लावर इज कलरफुल फॉर द अट्रैक्शन ऑफ पोलिनेटर तो कोउतरे बायोटिक ना अबायोटिक रे कोन आंसर बायोटिक लिविंग अबायोटिक इज नॉन लिविंग ताले को पोलिनेशन रे बायोटिक पोलिनेशन रे बस परफेक्ट बायोटिक जेहेतु बायोटिक पोलिनेशन ता लिविंग बा लिविंग कंपोनेंट्स लाइक तमरो हनी बी हो किबा तमरो जे इंसेक्ट माने होतु रोडेंट्स माने होतु जेहेतु लिविंग द्वारा पोलिनेशन होउची ताको हम बायोटिक पोलिनेशन कहूजे एंड बायोटिक पोलिनेशन रे जनरली लिविंग द्वारा जेहेतु होउची तो बायोटिक पोलिनेशन जो शो करथियो फ्लावर्स माने से फ्लावर्स गुडा को जनरली कोन हेतिबे ना कलरफुल हेतिबे परफेक्ट ओके देन चलो मते को कि को पोलिनेशन अबायोटिक एंड बायोटिक भितरे लार्ज फिदरी स्टिग्मा एंड ओएल एक्सपोज्ड स्टामेन large फिदरी स्टिग्मा एंड ओएल एक्सपोज्ड स्टामेन कोतरे थिबो लार्ज फिदरी स्टिग्मा एंड ओएल एक्सपोज्ड स्टामेन जनरली को पोलिनेशन है बायोटिक ना अबायोटिक देखिए के जनकर ठीक होची टू अट्रैक्ट द लिविंग वंस द फ्लावर्स आर कलरफुल इन द बायोटिक पोलिनेशन टू अट्रैक्ट द पोलिनेटर दिस इज द परफेक्ट लाइन राइट abiotic answer is abiotic perfect चलो देखो कि who can say कंगारू रैट ता बॉडी रो जो इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन करे this is an example of physical adaptation physiological adaptation behavioral adaptation now what kind of adaptation it is kangaroo rat तांको बॉडी रो जो इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन करे kangaroo rat who is हरिहर is okay kangaroo rat physical md कौसर physiological कंगारू रैट दैट इज फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन करे फिजियोलॉजिकल ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया सॉरी ये क्वेश्चन छाडी गले 91 क्वेश्चन को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेराइटी ऑफ राइस रो वेराइटी कोन काली कहितले हमें को कि आ भितर राइस वेराइटी कोटा सोनालिका कल्याण सोना एटलास 66 हिमगिरी रत्ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए राइस वेराइटी तमे जते बेले ओयूट रे पढिबो एग्रीकल्चर तो तुमको सबु राइस रो वेराइटी भितर पढा जीवो दैट इज हमरो ओडिसा रे केतेरा राइस हम खाउजे तार लोकल ना कोन तार साइंटिफिक ना कोन देन सेही ब्रीड को नेकिरी कोन कोन नुवा ब्रीड तमे डेवलप करियो तमे सिखा जियो फॉर एग्जांपल तमरो इनोवेटिव आइडिया अछि तो जेमति कि अरुआ चावल सो उसना चावल को ब्रीड करबो तो डिफरेंट चावल अछि जेमति कि तो सबु चावल को नेकिरी केमति कि नुवा ब्रीड करि परिबो को चावलटा होछि न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड तो सबु डिटेल्स तम पढिबो एंड जेहेतु ओडिसा रे ही तम एग्रीकल्चर पढिबो सो ओडिया टर्म को पूरा अक्वेंटेड हो जेमति कि बहुत ना अछि जो नाटा कहया को फनी बट लोक माने ताकू लोकल एरिया भी जानु छथि जेमति कि माई अंडीरा धान हमें कहिला बेल को अबागे लागुची बट पार्टी को भल न लागे माई अंडीरा धान कहया पई बट रियलिस्टिक रे माई अंडीरा धान अछि सो विभिन्न प्रकार yes OUT research line अछि after your graduation you can go for research you can join MSc चलो ताले कोन हबो रत्ना एंड जया रत्ना these are the variety of rice from India सोनालिका कल्याण एंड कल्याण सोना तो ये होची व्हीट रो वेराइटी हिमगिरी व्हीट रो वेराइटी एटलास 66 व्हीट रो वेराइटी चलो मते को कि IR8 जो राइस टा रहला जनरली एटा आकु किए प्रोडक्शन करथला IR8
was produced by कौन हबो MD course sir, that is you have to learn Odia in your OUT college, because as it is a college of Odisha, so you should try Odia language. बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग करा पई तमरो पीसीएम थिबा दरकार तार कोन आंसर IR8 होची इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपाइंस जनरली जो IR8 वेराइटी को कोठु की बाहर करतला इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपाइंस IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हैला मन रखिबो ताइचुंग नेटिव 1 ए वेराइटी जनरली कोड आस्तला ताइचुंग नेटिव 1 वेराइटी वाज प्रोड्यूस्ड बाय कोन हबो बायोटेक एग्रीकल्चर पाई तो ओयूटी अछि ना ओयूटी रे वेटनरी एग्रीकल्चर बायोटेक एग्रीकल्चर अछि करि परिबो ओयूटी रे ताइचुंग नेटिव 1 फ्रॉम द ताइवान परफेक्ट राइट ताइचुंग नेटिव 1 फ्रॉम ताइवान तो जनरली जदि हमें देखिबा ग्रीन रिवोल्यूशन केबे टू स्टार्ट हेतला हु कैन से ग्रीन रिवोल्यूशन जनरली केबे हेतला ग्रीन रिवोल्यूशन केबे हेतला ऑप्शन दोची 1950 1960 1970 1980 हु कैन से ग्रीन रिवोल्यूशन बही रे देइछि 90 50 बोली नाइन 90 50 ओके चलो व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक हु कैन से व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक देखिए कहार मन अछि हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक कहा को आजिवो हु कैन से सरोज सोनालिका तुम ना अनुसार मन रखो सोनालिका एंड कल्याण सोना दीज आर द वेराइटी ऑफ व्हीट 1960 बोधे आई थिंक मते लागुची सदा किटू 1960 बोधे लागुची जो ग्रीन रिवोल्यूशन एनसेट तो 1960 थियो बोधे मते लागुची काहे ना 1960 थिला बोले growing plant without the soil that is the development of plant without the soil बा बिना कोनसी soil रो यूज करके जदि हमें that is hormones oxygen giberellin cytokinin सब हार्मोन दे के प्लांट रो ग्रोथ करूचे that is called as hydroponics technique perfect what is the full form of a GEAC who can say what is the full form of a GEAC then what is biopiracy कोन GEAC रो full form कोन को what is the full form of GEAC genetic engineering approval committee perfect genetic engineering approval committee and what is biopiracy who can say biopiracy kono biopiracy that is the use of product by the multinational company without the proper authorization of the owner ro बिना authentic परमिशन बिना जदि तुम बायो प्रोडक्ट को इलीगल ओनरशिप परफेक्ट इलीगल ओनरशिप दैट इज जी से प्रोडक्ट रो एक्चुअल ओनर तांकर बिना परमिशन रे विदाउट द ऑथेंटिक परमिशन जदि तुम यूज करूचो दैट इज कॉल्ड एज बायोपिरासी परफेक्ट ठीक अछि व्हाट इज बायोफोर्टिफिकेशन व्हाट इज बायोफोर्टिफिकेशन कोन हबो आंसर दियो परफेक्ट अछि समस्ती करो बायोफोर्टिफिकेशन कोन व्हाट इज बायोफोर्टिफिकेशन हु कैन से बायोफोर्टिफिकेशन कोन बायोफोर्टिफिकेशन होची दैट इज ब्रीडिंग द क्रॉप्स with more nutritional value with the more protein value with the more carbohydrate value with the more fat value आमे गोटे जनरली कोन करिवा perfect breeding the crop using the vitamin by breeding the enriched
फूड कंटेन ब्रीड जदि आम एमती गोटे ब्रीड को डेवलपमेंट करिया जो ब्रीड रे हाई प्रोटीन कंटेंट थिबो हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू थिबो बा हाई कार्बोहाइड्रेट वैल्यू थिबो हाई फैट वैल्यू थिबो दैट इज कॉल्ड एज बायो फोर्टिफिकेशन राइट देन मते को कि व्हाट इज बायो मैग्निफिकेशन तापर आंसर दियो बीओडी इज व्हाट इज बीओडी तापर आंसर दियो बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिजोल्व ऑक्सीजन और बीओडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिजोल्व ऑक्सीजन कौन हो आंसर दियो व्हाट इज बायो मैग्निफिकेशन फर्स्ट बायो मैग्निफिकेशन कौन इंक्रीजिंग द न्यूट्रिशनल सोनालिका बढ़िया अछि नीतीश परफेक्ट दैट इज हम जानि छे बायो फोर्टिफिकेशन होची एनरिच द न्यूट्रिशनल वैल्यू इन द ब्रीड biological oxygen demand increasing the toxic amount the trophic level each trophic level जता हमें जीवा तो टॉक्सिसिटी टा बढ़ी जीवाटा को कहा जाए बायो मैग्निफिकेशन एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओडी बीओडी रो फुल फॉर्म कोन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओडी बढ़िया समस्त करो परफेक्ट चलो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड बीओडी इज स्ट्रिक्टली हम जाने छे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिजोल्व ऑक्सीजन हैला जेते बीओडी मोर द पोल्यूटेड एंड गोटे वाटर बॉडी रे जदी बीओडी वैल्यू अधिक अछि से वाटर होची बहुत सारा पोल्यूटेड अछि एंड जो वाटर बॉडी जेते पोल्यूटेड तार डिजोल्व ऑक्सीजन सेते कम ठीक अछि बढ़िया चलो नेक्स्ट जीवा Which of the following disease is caused by the bacteria? Bacteria द्वारा generally co disease. Which of the following disease is caused by the bacteria? Which of the following disease is caused by the bacteria? कौन हबो? Answer दियो. Which of the following disease caused by the bacteria? This is one of the most important question. Black rot of crucifer, powdery mildew, lead blight of potato, red rot of sugarcane. C. Brown rust of wheat, red rot of sugarcane, lead blight of potato. Brown rust of wheat, red rot of sugarcane, lead blight of potato. These are the fungal disease. And black rot of cruciferous होची. This is a bacterial disease. ताल आंसर होची C. हैला fungal disease सब किए किए फंगस द्वारा brown rust of wheat red rot of sugarcane lead blight of potato मन रखा एटा क्वेश्चन पचार हैला ए चैप्टर रो वेटेज रहउची तमे जेहेतु कोर्स टा होची ओयूटी रिलेटेड कोर्स अछि तो निहात रूपे चैप्टर रो वेटेज अछि yes हरिहर that is brown rot of wheat, red rot of sugarcane, lead blight of potato. These are the fungal disease. Same that is black rot of cruciferous bacterial disease. Perfect. Then मते को कि suppose a farmer want to increase the stem height of sugarcane. Suppose sugarcane रो stem height को हम increase करियर अछि then farmer कहा को use करिवो ऑक्सिन ना जिबोलिन कोन हबो ऑक्सिन ना जिबोलिन जनरली internode elongation ପାଇଁ काहा को यूज करा जिवो which hormone is important for the internode elongation जिबोलिन फर्स्ट देख अच्छा परफेक्ट जिबोलिन देन मते को कि फास्ट जिबोलिन किए प्रथम जिबोलिन फास्ट जिबोलिन किए GA1 GA2 GA3 कोन हबो फास्ट जिबोलिन who can say fight boy gaming कह लास्ट वर्ड को हला डोंट वरी हां GA3 हला देखा होची लेटर ऊपर मु लिखि दोची आई थिंक टिके टिके तुम प्रॉब्लम होतियो बट GA3 इज द फास्ट जिबोलिक एसिड देन मते को कि जिबोलिक एसिड कहा सो एंटागोनिस्ट जिबोलिक एसिड इज एंटागोनिस्ट टू व्हिच प्लांट हार्मोन कौन आंसर जिबोलिक एसिड इज एंटागोनिस्ट टू व्हिच प्लांट हार्मोन आंसर दियो जिबोलिक एसिड टा को प्लांट हार्मोन सह एंटागोनिस्ट
Gibberellic acid is antagonist to which plant hormone? Or if you like this abscisic acid, perfect. आमे जानी छे abscisic acid गोटे स्ट्रेस हार्मोन दैट इज कोन करे ना सीड डोरमेंसी को प्रमोट करे. सीड डोरमेंसी कोन आमे जानी छे फेवरेबल कंडीशन थिबा सत्वे जदि गोटे सीड ता जर्मिनेट करि पारुनी, इनएबिलिटी ऑफ द सीड टू जर्मिनेट, सीड कोट भितरे जदि सीड ता अछि जर्मिनेट करि पारुनी ता पय गोटे कारण हेई पारे abscisic acid स्ट्रेस हार्मोन. तो सीड डोरमेंसी को प्रमोट करछि abscisic acid. बट जिबरलिक एसिड जोटा रहला बा जिबरलिन जोटा रहला से जनरली कोन कोचे ना सीड डोरमेंसी को प्रिवेंट करूची बा सीड प्रोडक्शन रे हेल्प करूची आ एटा सीड प्रोडक्शन को अटकेई दोची. सो दीटा को एंटागोनिस्ट. सेमते मन मते को कि ऑक्सिन रो एंटागोनिस्ट किए, ऑक्सिन रो एंटागोनिस्ट किए, व्हिच प्लांट हार्मोन इज एंटागोनिस्ट टू ऑक्सिन? हरिहर जय हरिहर सर टिके केमिस्ट्री रो चैप्टर कहबे सर एटा को बुक रो पीवाईके एटा होची जनरली एनसीईआरटी एग्जांपलर रो अछि क्वेश्चन एंड आल्सो दैट इज किछटा पीवाईके क्वेश्चन अछि को बुक रो नो पीडीएफ. जदी इफ यू वांट दिस पीडीएफ देन जनरली तमे जो तळे नंबर दिया से नंबर रे कांटेक्ट करो एंड जे भी रिसीव करियो कहियो कि सर को नंबर पई देन मते को मु तम पीडीएफ पठै देबी हला. साइटोकाइनिन ना ऑक्सिन रो एंटागोनिस्ट होची साइटोकाइनिन. परफेक्ट. साइटोकाइनिन रेडी मस्त. मते को कि ई क्यूरोसा जो साइंटिस्ट थिले ई क्यूरोसा कौन डिस्कवर करथिले ऑक्सिन ना जिबरलिन ना साइटोकाइनिन ना एथिलीन abscisic acid. ई क्यूरोसा was the scientist who discovered sure fight boy gaming 100% मु ट्राई करबी तुमको इंस्पिरेशन कर दैट इज इंस्पायर करिया पे. ई क्यूरोसा जिबरलिन ना जिबरलिन FWONT होची ऑक्सिन, FWONट होची ऑक्सिन, FWONट ऑक्सिन बट जिबरलिन होची ई क्यूरोसा. चलो नेक्स्ट दिबा इन बायोफोर्टिफिकेशन द ऑब्जेक्टिव इज टू इंप्रूव द क्वालिटी एज वेल एज द कंटेंट ऑफ कोन आंसर मात्र 100 वाचिंग एते कम पिला कोन माने एग्जाम जते पाके पाके आसी पायल इट्स ओके एंड एंजॉय करो एटू आस्ते 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 हम पढुचे जिंस ओडा मन रखी चलो. ओके कोन हबो बायोफोर्टिफिकेशन हम जानि छे बायोफोर्टिफिकेशन द टर्म व्हिच इज related to improve the quality as well as the content of micronutrient vitamin oil all of this. Perfect. 93 रा आंसर होची all of this. बढ़िया बायोफोर्टिफिकेशन all of this आराम से पढ़ो देखियो इजीली सब जिंस मन रहि जिवो हला. अच्छा काली गोटे जिंस कहितले मन अछि क्वेश्चन काली जो माने थिले से माने कहिबे क्वेश्चन थिला जनरली क्रेब साइकिल occurs in cytoplasm, matrix of mitochondria na inner membrane of mitochondria. Generally Krebs cycle or TCA cycle or citric acid cycle occurs in the cytoplasm or matrix of mitochondria or inner membrane of mitochondria. कौन हबो आंसर कौन हबो that is matrix of mitochondria. and काले हम ଗୋଟେ क्वेश्चन करतले all the enzymes of Krebs cycle, all the enzymes of Krebs cycles are present in matrix of mitochondria, but there is exception, the enzyme which is not present in the matrix of mitochondria and it is present in inner membrane of mitochondria. कौन थिला से enzyme? all the enzymes of Krebs cycle occur present in matrix of mitochondria, but there is exception. जो को enzyme टा succinate dehydrogenase. succinate dehydrogenase is an enzyme which was present on the inner membrane of mitochondria. Perfectly मन रखिबो बढ़िया. देन मते को कि जनरली ग्लाइकोलिसिस रो जो स्टेप्स रहिला को स्टेप रे हमको एटीपी मिले. व्हाट आर द टू स्टेप्स in which we are getting the ATP in glycolysis? glycolysis perfect succinate glycolysis रो को स्टेप रे हमको एटीपी मिले. कोन आंसर मन रखिबा क्रेब साइकिल रे सब जेहेतु क्रेब साइकिल मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होची सो एंजाइम्स वाले मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया थिबे बट एक्सेप्शन सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज को स्टेप रे जनरली हमको एटीपी मिले. ग्लूकोज रो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एटीपी मिले नॉट रिक्वायर माने एटीपी यूटिलाइज हुए नहीं पचारनी क्वेश्चन एटीपी टा हमको गेन करूचे नॉट एटीपी इज यूटिलाइज्ड.
फ्रुक्टो एटी भी हमें कोठु मिलुची हमको 1,3 20 phosphoglyceric acid 3 phosphoglyceric acid and phosphoenol pyruvate 2 pyruvic acid. चलो नेक्स्ट इबा द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन सॉरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग रो ऑब्जेक्टिव कोन increase the quantity of yield resistance various disease improving the quality of product एक्चुअली हम एनिमल ब्रीडिंग करवा कहीं जो मैंने वेटनरी पढ़े तो से 100% शिखिबे एनिमल ब्रीडिंग आ जो मैंने एग्रीकल्चर पढ़े से शिखिबे प्लांट ब्रीडिंग बिकॉज वेटनरी तुमको जानिया पड़ो कि एनिमल मान को ब्रीड करवा द्वारा कौन कौन नुआ नुआ एनिमल बाहर तो एनिमल को ब्रीड करेबो कौन पे एथिपाई करेबो जेमती तो जो एनिमल गोटे नुआ ब्रीड तुम बाहर करिवो से जेमती कि इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ एड भलो क्वालिटी रहितवा दरकार रेजिस्टेंस टू वेरियस डिजीज जमा डिजीज एते से ब्रीड को हो नथिवा दरकार इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट तादर जो क्षीर बाहरथिबो कि जो भी प्रोडक्ट पई तुम ब्रीड टा बाहर करछो तार गोटे भलो इंप्रूविंग क्वालिटी प्रोडक्ट बाहरथिबा दरकार तो ऑल ऑफ दिस ब्रीड करिवो एथिपाई जेमती कि हमें देखिथिले गोटे युवराज बोली गोटे महिषी थिला बोधे गोटे नथिला पंजाब ना कोठो गोटे improve all options ओके तो जनरली गोटे नथिला युवराज बोली ना कोठी गोटे बुल थिला पंजाब रे ना कोन बस बस एंड सेतिरे जनरली ताकू 2 करोड़ 3 करोड़ भलिया भी जाउथिले ताकू किनिया पई किंतु से जो फार्मर जी ताकू रखिथिले से स्ट्रिक्टली मना करथिले कि ना कि यार सीमेंटा जोटा कि मु बिकुची बहुत पैसा रे तो बुल को बिकिबेनी तो फार्मर माने निहाती रूपे इंटेलिजेंस हबा दरकार एंड तमे एग्रीकल्चर जतले पढिबो एंड जतले एग्रीकल्चर परे तमे सपोज एग्रीकल्चर ऑफिसर हेलो कि दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर जॉब कलो तो निहाती तमरो मोरल ड्यूटी रहइबो कोठी ना कोठी टाइम बाहर करी कि छोटो मोटो दैट इज इंस्पिरेशनल वाला गां माने करे जाई कि फार्मर मान को इंस्पायर करिया दरकार एंड फार्मर्स मान को तम सचेतन करियार अछि कि तमे जो कन्वेंशनल वे रे चाष करूछो बा जो आगरो जो काल रे चाष करा होतला सेही वे रे चाष करूछो तो सेति पई तमर जो न्यूट्रिशनल वैल्यूटा तम फूड रो एनरिच हेई पारन और तुमको जो तमे एही प्रोसेस रे चाष करिवो तो तमर दैट इज जो वैल्यूटा अधिका बढ़ी जीव एंड तम प्रोडक्ट रो क्वांटिटी एंड आल्सो क्वालिटी भी इंक्रीज होबो ये होची दैट इज तमे जतले पढिवो एग्रीकल्चर तो से तम पाठ ही सेया तो निहात रूपे तुमको फील्ड को जीवा पड़िवो एंड फील्ड रे भी दैट इज फार्मर मानक सो टिके इंटरैक्ट करिया पड़िवो बट एमती नाही कि गोटे ऑफिसर हे गेला परे दैट इज डिपेंड अपॉन यू जदि तुमको सोसाइटी पई किछि करियर अछि देन पॉजिटिवली दैट इज तमे निहात रूपे दैट इज लोक मानको बा गां रे जो लोक मान अछन जो फार्मर मान अछन से मानो तुम एजुकेटेड करिवो दैट इज वेट इज 1500 केजी ऑफ युवराज परफेक्ट बढ़िया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन रो फादर किए नॉर्मन ई बर्लंग डॉक्टर वर्गीस क्यूरिन ना पंचानन महेश्वरी पर जाना पड़थि इंडिया ना एमएसएस स्वामीनाथन द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन डी ए एमएस स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन एमएस स्वामीनाथन डी दैट इज एमएस स्वामीनाथन चलो नेक्स्ट बा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ एसीपी सिंगल सेल प्रोटीन रो एडवांटेजेस कोन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन आंसर दियो सिंगल सेल प्रोटीन रो एडवांटेजेस कोन ओके कौन हम दैट इज हमें जानिचे रिच इन हाई क्वालिटी प्रोटीन एंड पूर फैट कंटेंट परफेक्ट प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट सो इट हेल्प्स टू मिनिमाइज द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इट कैन बी प्रोड्यूस्ड लैबोरेटरी थ्रू आउट द ईयर परफेक्ट सिंगल सेल प्रोटीन स्पिरुलिना में एग्जांपल नहीं परिबा स्पिरुलिना चलो नेक्स्ट बा डिजीज रेजिस्टेंस इन प्लांट कैन बी इंड्यूस्ड बाय
Disease resistance in plant can be induced by mutation, breeding with wild relative, proper manuring, na yearly sowing. Disease resistance in plants can be induced by mutation द्वारा, ना breeding with wild relatives, ना proper manuring, ना yearly sowing. कौन हो? Breeding with wild relatives. Next, variation of plants produced by tissue culture is known as, variations in plants by tissue culture is known as somaclonal variation, na androgenic variation, na hybridization, na induced variation. Variation in plants produced by the tissue culture कौन हो? आंसर दियो. Perfect. कौन हो? That is somaclonal variation. What is tissue culture? Tissue culture technique कौन? Tissue culture technique रे generally गोटे part of the plant, गोटे plant रो part जहाँ को हमें कही परिया explant बोली, part of the plant बा explant रू हमें total whole plant को generate करी परिया, जो culture द्वारा part of the plant बा plant रो गोटे part रू total plant को generate करिबा tissue culture technique रे. Okay, and generally part of the plant को हमें explant बोली कहूचे, and explant जो total generate करी परियो whole plant ता capacity को जे totipotency, and explant को नेगिरी culture media रे grow करकी, that is micropropagation technique रे बहुत सारा large amount of plant हमें production करी परियो. Callus to plant. Okay, चलो next बा black rust of wheat is caused by, एबे हमें कले brown rust of wheat, red rot of sugarcane. सर एग्रीकल्चर रे फ्लावर ऊपर ये एग्रीकल्चर रे देखो एग्रीकल्चर सो निहात रूपे तमरो दैट इज सब प्लांट्स विषय पडिबो, फ्लावर्स रिलेटेड भी पडिबो, तो सब डिटेल्स तो ओडिसा भितरे कोन कोन चाष होची, को मौसम रे कोन चाष होची, को ब्रीड रो चाष होची, ईस्टर्न ओडिसा रे कोन होची, वेस्टर्न ओडिसा रे कोन होची, को क्रॉप ता दैट इज तुमको प्रोडक्शन करियर अछि, को क्रॉप रो मार्केट रो वैल्यू अधिका अछि, पंजाब कोन पई एग्रीकल्चर रे अधिका, तो सब एनालिटिकल व्यू आसीबो एग्रीकल्चर तुम पढिबो तो 4 इयर्स रो कोर्स, एंड प्रॉपर्ली गोटे पिला यदि 4 इयर्स पढिला 100% तार बहुत सारा जिंस डेवलपमेंट हे परिबो, एंड ताकू नै कि से भी कैरियर बढ़िया करि परिबो. कोन हो? ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रस्ट ऑफ sugarcane, lead blight of potato, these are caused by the fungal. Then black rust of wheat, rust used to like a pus, Pusinia rust. कोन हो? आंसर C, that is Pusinia. Perfect. Then मते को कि जनरली ये जो फंगस टा Pusinia टा कोन कहार एग्जांपल, फाइकोमाइसेटिस ना बैसिडोमाइसेटिस ना ड्यूटेरो, फाइको ना आस्को ना बैसिडो ना ड्यूटेरो. जनरली जो यूस्टिलागो Pusinia, यूस्टिलागो स्मॉट and Pusinia rust, these are example of which fungus? फाइकोमाइसेटिस, फाइको ना आस्को ना बैसिडो ना ड्यूटेरो. कोन हो? बैसिडोमाइसेटिस. परफेक्ट. फाइकोमाइसेटिस नो, म्यूकर राइजोपोस अल्बुगो ये होची फाइकोमाइसेटिस, म्यूकर राइजोपोस अल्बुगो फाइकोमाइसेटिस. आस्कोमाइसेटिस रे एग्जांपल होची एस्परगिलस, क्लाविसेप्स, न्यूरोस्पोरा. बैसिडोमाइसेटिस होची मशरूम जोटा कि एगारिसस कहूचे, आ स्मॉट यूस्टिलागो, आ Pusinia होची रस्ट Pusinia. ड्यूटेरोमाइसेटिस होची अल्टरनेरिया, कोलिट्रम एंड ट्राइकोडर्मा, टीसीए. एगुडा सब हला. आंसर होची कोन? आंसर होची बैसिडोमाइसेटिस हला. Pusinia होची बैसिडोमाइसेटिस. नेक्स्ट जो ब्रीडिंग क्रॉप विथ हाई लेवल ऑफ मिनरल, विटामिन एंड प्रोटीन, एआईपीएमटी 2010 रो क्वेश्चन. कौन आंसर? ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स विथ हाई लेवल ऑफ मिनरल्स, विटामिन एंड प्रोटीन इज कॉल्ड एज सोमैटिक हाइब्रिडेशन, बायोमैग्निफिकेशन, बायोफोर्टिफिकेशन, माइक्रोप्रोपगेशन. आंसर इज बायोफोर्टिफिकेशन. परफेक्ट. बायोमैग्निफिकेशन ऑलरेडी तुम जाना अछि, ट्रॉपिक लेवल रे टॉक्सिसिटी बढ़ी जीवो. देन मते को कि जनरली
पोमाटोटा जनरली केमती हिच इज देयर एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पोमाटो पोमाटो को नेकी कोन टोमाटो प्लस पोटैटो तो पोमाटोटा जनरली केमती होची ट्रिक फॉर एग्जांपल्स एग्जांपल ट्रिक्स पे मन रखियो केमिति तो फाइकोमाइसिट्स रो मन रखि पारो एमआरए म्यूकर राइजोपस अल्बुको आस्कोमाइसिट्स रो एस्पेगुलस क्लाविसेप्स न्यूरोस्पोरा अगोटे केन मन रखियो एसीएन बैसिडोमाइसिट्स रो मन रखियो मशरूम देन होची यूस्टिलेगो स्मॉट प्यूसिनिया रस्ट पॉम मन रखो पॉम मशरूम यूस्टिलेगो प्यूसिनिया ड्यूटेरोमाइसिट्स रो टीसीए साइकिल मन रखो अल्टरनिया कोलेट्रैकियम ट्राइकोडोमा चलो एटा कैन मन रखि परिमा एस्पेरेगुलस क्लाविसेप्स न्यूरोस्पोरा कैन ठीक अछि पोमाटो होची कोन दैट इज पोटैटो प्लस टोमेटो सोमैटिक हाइब्रिडेशन पोटैटो प्लस टोमेटो दैट इज सेल नियाबो सेल रो साइटोप्लाज्म को रिमूव करा जिवो हमें जानि छे सेल विदाउट सेल वॉल सेल निया जो सेल रो सेल वॉल को रिमूव करा जिवो एंड सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट रो फ्यूज करा जिवो सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट टोमेटो प्लस पोटैटो दैट इज कॉल्ड एज पोमाटो परफेक्ट बढ़िया पोमाटो नेक्स्ट जिबा an improved variety of transgenic basmati rice does not require chemical fertilizers and growth hormones give high yield and rich vitamin A in completely resistant to all insect pests and resist paddy now gives high yield but has no characteristics aroma does not require chemical fertilizer and growth hormones improved variety of transgenic basmati rice को नेकी कोटा परफेक्ट हबो B that is gives high yield of vitamin A deficiency ले कौन disease हबो and what is the other name of vitamin A who can say vitamin A रो other name कौन and the deficiency of vitamin A को आंसर दियो विटामिन ए को हम अदरवाइज कोन को एंड विटामिन ओके विटामिन ए टा को हम कहू जनरली रेटिनॉल एंड विटामिन ए रो डेफिशिएंसी ले दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस परफेक्ट नाइट ब्लाइंडनेस रेटिनॉल एंड लाइट ब्लाइंडनेस विटामिन B1 अदर नेम कोन डेफिशिएंसी ले कोन हो हु कैन से विटामिन B1 what is the other name of vitamin B1 and what is the disease caused by due to the deficiency of a vitamin B1 कोन हो retinol night blindness vitamin A related perfect ता पर आंसर दियो ओके चलो कोन हो बेरी परफेक्ट विटामिन B1 रो अदर ना होची थियामिन काली हमें कहितले भाईटा मन नहीं थियामिन आउ डिजीज कॉज करे बेरी काले हम कहितले सब तुम माने सब आंसर देथिलो देन मते कोइ कि जनरली विटामिन B2 नेम कोन डेफिशिएंसी डिजीज कोन विटामिन B2 राइबोफ्लाविन एंड डिजीज करिवो केलियोसिस विटामिन C एस्ट्रोबिक एसिड डिजीज करिवो स्कर्वे परफेक्ट मन थिबो सब हला बस परफेक्ट थियामिन चलो नेक्स्ट इबा जया एंड रतना डेवलप जया रतना पर देखा होची इंडिया ना जया एंड रतना डेवलप्ड फॉर ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया एट द वेराइटी ऑफ Joya and Ratana developed for green revolution in India are the variety of कौन आंसर Joya Ratana टा इंडिया जो डेवलप कराइतला एटा को वेराइटी ऑब्वियसली एटा राइस वेराइटी हला कहलो हिमगिरी टा जनरली कहार वेराइटी हिमगिरी
हिमगिरीटा कहार वेराइटी हु कैन से राइस परफेक्ट हिमगिर देखो माने रियल रे मु कहूची जो पिला माने बेसिकली अछंती दिव्याश्री होंतु प्रबानी अर्चिता बिंदु स्वाति सिप्रा तृप्ति अभिप्सा एमडी कौशर अर्चिता लिप्सा तो बाकी बढ़िया आंसर तुम मैंने दौच एंड भगवान को आम एति प्रे करिया कि क्वेश्चन टा भलो क्वेश्चन आसू जो जो पिलांकर जो जो शिफ्ट होती से पिलांकर शिफ्ट वाइज क्वेश्चन भलो पड़ू एंड जमती पिलांकर निहाती रूपे जी होप अच्छे एंड सब पेरेंट्स मानकर भी निहाती रूपे प्रेशर भी अच्छी पिला मानक ऊपर कि ओयूटी पा बोली जहाँ तू प्रिपरेशन करूछु कि जहाँ भी जहाँ निहाती रूपे पेरेंट्स मानकर भी एम अच्छी सो आम भगवान को एति प्रे करिया कि दैट इज भलो क्वेश्चन आसू है आ गोटे मन रखियो सब जमा क्वेश्चन रे स्टिकी होकर रहिबनी तुमको बहुत आगु को जीवार अच्छी क्वेश्चन रे स्टिकी होकर रही गले हैरान हबो हला चलो एंड जमा भी किसी प्रॉब्लम नहीं एग्जाम सरला पर हमें आज यूजुअल देखा हुआ जो मानकर रिजल्ट खराब होची किसी पानिक हवा दरकार नहीं सर मो नेम नियंतु आयशा यस विजयलक्ष्मी तृप्ति अंकिता ओके ठीक अच्छे है एंड जनरली आमर ए 2025 पाई बा जो माने तो तुम 2025 पढ़ो जो माने 2025 पाई प्रिपरेशन भी करबा चाहछन्ती से रिगार्डिंग भी हमर 1 ईयर बैच भी स्टार्ट होगा जाउची जो 1 ईयर बैच रे जदी किए कौन सी कोर्स पई एडमिशन कहार न होला देन जदी 1 ईयर पई प्रिपरेशन करबा चाहिबो तो 2025 पई ओयूटी रो बैच भी स्टार्ट हो होला ओयूटी 1 ईयर बैच स्टार्ट हो एंड निहात रूपे जदी कहार फाइनेंशियली के वीक असंती तो 100% मो द्वारा जेतिकी पॉसिबल हेई परिबो गारंटी कोर्स फी रो कमेया पई 100% ट्राई करिवि एटा पूरा श्योर जदी कोनसे पिला 1 ईयर प्रिपरेशन पे इंटरेस्टेड अछंती एंड फाइनेंशियली वीक अछंती तो निहात रूपे मो 100% रो 200% ट्राई करिवि निहाती किछि ना किछि फाइनेंशियली सपोर्ट दवा पई एंड 100% दैट इज कोर्स फी को कमेया पई चलो जेबा कोन हबो हिमगिरी इज ए वेराइटी ऑफ व्हीट 2011 एआईपीएमटी बा नीट रो क्वेश्चन चलो the following statement A to D about the organic farming ro question utilize genetically modified crops like BT cotton use only natural produced inputs like compost naturally जो compost सारा फारा एगुडा दबा does not use pesticide and urea produce vegetables rich in vitamin and mineral about organic farming कोन हबो हरिहर मु तम विशेष पढुची जगन्नाथ यस क्रिस हरिहर यस आयशा ओके आयशा चलो कौन आंसर दियो डी ए और बी यूटिलाइज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लाइक बीटी कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रेटजी ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनिक माने कोन माने ओटे में माने पूरा देसी स्टाइल रे फार्मिंग करिया सो डज नॉट यूज द पेस्टिसाइड एंड यूरिया बा पेस्टिसाइड दबानी प्रोडक्शन करिया वेजिटेबल रिच इन विटामिन एंड मिनरल हे परियो use only the natural produced input like compost एटा भी हे परिबो बी हे परिबो डी हे परिबो where is option B and D हे परिबो सी भी हे परिबो does not use pesticide एटा भी ठीक तो बी सी डी हे परिबो ए हबनी जेनेटिकली मॉडिफाइड करिया पय कहबे बीटी कॉटन नो तो बी सी डी मोर अप्रोप्रिएट लागु छ ए ऑप्शन ठीक अछि समस्त कर ए बढ़िया चलो नेक्स्ट जीवा कंसीडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट एंड द सिलेक्ट फोर स्टेटमेंट को भल से पढ़ो देन करेक्ट आंसर दियो फोर स्टेटमेंट एपड अछि सिंगल सेल स्पिरुलिना कैन प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड रिच इन प्रोटीन मिनरल विटामिन एक्सेट्रा बॉडी वेट वाइज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस may be able to produce several times more protein than the cow per day common button mushrooms are very rich source of vitamin C a rice variety has been developed which is very rich in calcium कौन हबो क्वेश्चन टा कौन दीची कंसीडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट आंसर इंक्लूड्स करेक्ट ओके करेक्ट पचार तो व्हिच इंक्लूड्स करेक्ट वंस ओनली करेक्ट आ भीतर कोटा देखो सिंगल सेल प्रोटीन रिलेटेड तो पूरा परफेक्ट अछि हमें जानि छै सिंगल सेल प्रोटीन होची स्पिरुलिना परफेक्ट बॉडी वेट वाइज जो देखिबा द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस में एबल टू प्रोड्यूस सेवरल टाइम्स मोर प्रोटीन दैन द काउ पर डे ठीक अछि ए परिबो 100% ए परिबो कॉमन बटन
mushroom are very rich in source of vitamin C and rice variety has been developed which is very rice ता vitamin A हवा ना तो कौन हबो कोटा हबो आंसर I think A और B हबो A और B हला वाला लागुची so option C is the perfect A और B हां चलो thank you अन्नपूर्णा A और B next green revolution India occurred during देखो green revolution क्वेश्चन आसला according to NCERT green revolution India occurred during 1960 कहीं ना तुम देखिबो गोटे बहिरे गोटे लाइन लिखाई 1960 मसिया रु 2000 भितरे राइस वेराइटी एतिक इंक्रीज हेची व्हीट वेराइटी एतिक इंक्रीज हेची रोशन इट्स ओके चलो जोटू जॉइन कलो भाबे कि लाइफ रो सेउटू स्टार्ट करो गोटे नाही सबोले पई जो माने गोटे नाही गोटे सलमान खान को मूवी माने करे दैट इज हमें जोटू ठियाबू सेठी लाइन शुरू हुए तो निजरो पोटेंशियल भी सेउट रखा दरकार एंड कॉन्फिडेंट भी सेउट रखा दरकार जोटू ठिया हबो सेटू लाइन शुरू होबा दरकार सो तमे निहात रूपे समस्त ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी गुड एंड वेरी क्यूट एंड आल्सो ब्रेवरी इन नेचर तो या रखा दरकार एंड हमकु ओयूट रे फाइट करियार अछि तो वीर माने जो माने से माने फाइट करनती एमति नाही घरे बसी पड़ती एंड पानी केकी बसंती वी हैव टू फाइट आम लाइफ रे हमकु बंचे गले निहात रूपे फाइट करिया पड़िबो एंड दुनिया साक्षी अछि जो माने जीवन रे फाइट करछंती से माने ही विन हेचंती जो माने घरे बसी आइछंती दैट इज नेचर से मानको सिलेक्ट करेनी अकॉर्डिंग टू डार्विन तो फाइट करियर अछि हारो जितु पछ कथा दैट इज हारी गले इतिहास रे ना लेखा बा जिति गले भी इतिहास रे ना लेखा बा सो दैट वी हैव टू फाइट गोटे कथा मन रखो पूरा आराम से चलो जॉब उठा तब सुबह रेडी सेही करेज रे रखा हम माइंड रे चलो ग्रीन रिवोल्यूशन आंसर होची 1960 तापर चलो कंजप्शन ऑफ व्हिच वन फॉलोइंग फूड कैन प्रिवेंट द काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस एसोसिएटेड विथ विटामिन ए कौन हम विटामिन ए क्वेश्चन पचारियो माने आखी मुजिक रे आंसर कौन दबा विटामिन ए पचारला माने आखी मुजिक रे आंसर गोल्डन राइस देवज्योति रेडी चलो कौन हम गोल्डन राइस विटामिन ए डेफिशिएंसी है विटामिन ए द अदर नेम इज रेटिनॉल एंड डेफिशिएंसी है नाइट ब्लाइंडनेस परफेक्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा रोजी ए ट्रांसजेनिक काउ known to produce a type of milk which has all the following characteristics except जो रोजी हमर थिला रोजी को नै कि सीयूट रो क्वेश्चन अछि रोजी को नै कि नीट रो क्वेश्चन एंड हम भगवान को डाकिया जगन्नाथ को डाकिया प्रभु रोजी को नै कि दैट इज हमर ओयूट रे क्वेश्चन पढू कोन आंसर रोजी a transgenic cow known to produce a type of milk which has all the following characteristics except प्रोटीन कंटेंट 2.4 ग्राम पर लीटर बढ़िया ए जो ट्रांसजेनिक काउ थिला बा जहार जीन को मैनिपुलेट करा हितला तो निहात रूपे शुभंकर बढ़िया वेल डन दैट इज जहार जीन को मैनिपुलेट करा हितला जो काउर 2.4 ग्राम पर लीटर जोटा कि न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस एज कंपेयर्ड टू द अदर काउ मिल्क हैज द ह्यूमन अल्फा लैक्टोबुमिन परफेक्ट मोर बैलेंस डाइट देन द नॉर्मल मिल्क ऑफ बेबी ना रिच इन कोलेस्ट्रॉल ट्रांसजेनिक काउ मिल्क ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टर्स एक्सेप्ट रिच इन कोलेस्ट्रॉल एटा तो हबोनी रिच इन कोलेस्ट्रॉल नो दैट इज ऑप्शन इज डी इज इनकरेक्ट परफेक्ट बढ़िया देन मते को कि व्हाट इज एम्फाइसीमा हु कैन से एम्फाइसीमा कोन व्हाट इज एम्फाइसीमा एम्फाइसीमा कोन व्हाट इज एम्फाइसीमा आंसर दियो एम्फाइसीमा कोन and this is the question from the breathing and exchange of gas and I'm strictly पढ़िचे emphysema the disease which is caused due to the cigarette smoking or when we are taking the cigarette the TAR the chemicals which are present in the cigarette which will decrease the surface area of alveoli mu Preeti yes Preeti decrease caused by the alveolar wall the surface of alveolar wall get decreased due to the cigarette smoking that is called as emphysema and मन अछि emphysema को क्योर करिया पई हमें काली गोटे कहितले अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन alveolar damage due to the cigarette smoking and alpha 1 antitrypsin बढ़िया चलो
अच्छा मते कहलो जनरली volume of air remain in the lungs even after forceful expiration. Volume of air remain in the lungs even after forcefully expiration. कुंथे की छाड़िया सत्वे किछि वॉल्यूम लंग्स रे रुहे सो याकु कोन को जे वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन इज कॉल्ड एज रेसिडुअल वॉल्यूम. परफेक्ट. तो क्वेश्चन पचारे फोर्सफुल एक्सपिरेशन बा कुंथेइकरी छाड़ीवा सत्वे लंग्स कोलैप्स हे अर्थात लंग्स कोन पई कोलैप्स होइनी सो एटा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर is located in medulla oblongata, pons, cerebrum, thalamus. Generally, in which structure respiratory rhythm center is located? What answer? Respiratory rhythm center is located in medulla oblongata, pons, cerebrum, thalamus. What answer? Pons. Payal मन रखो. That is the respiratory rhythm center which is located in the medulla oblongata. You have to remember. बाबू सामने गोटे मूवी नथिला medulla oblongata तार बॉल धरिया जातो कैश जोड़तियो medulla oblongata माडा हितो डॉक्टर बाबू जाइतियो सो मन रखो medulla oblongata रे जनरली respiratory rhythm center थाए and pneumotoxic center ता जनरली थाए कोठी that is pons area रे हैला P for pons P for pneumotoxic respiratory rhythm center medulla oblongata. Perfect. Then मते को कि जनरली एट जदि हम क्वेश्चन पचारिया मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन विल रिलीज फ्रॉम द पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया ना पार्स नर्वोसा. मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन विल रिलीज फ्रॉम पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा. कौन हबो? यस राइट. पार्ट्स इंटरमीडिया. परफेक्ट. बढ़िया अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन हम जदि पचरा हबो वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर एंड एक्सपायर ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन. नॉर्मल रेस्पिरेशन बेले वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर एंड एक्सपायर दैट इज कॉल्ड एज कोन? वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर एंड एक्सपायर ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन इट इज कॉल्ड एज volume of air person can inspire and expire during the normal respiration. Ankita, Vijayalakshmi, Subhas, Sibasis, Priyanka, Lipika, Sonalika, Vijayalakshmi, Manjri, Pratap, Sipra, Nivedita, Vijayalakshmi, Payal, MD Kausar, Abhisita, Rudra, tidal volume, voice of Krishna, tidal volume, Sipra, Payal, Susan. Okay. तो एक्चुअली मझिरे मझिरे पिलांकर ना भी न पढ़िले तो आई थिंक कोडी ना कोडी टिके बोरिंग लागे बट परे जो माने रिकॉर्डिंग सुनुचंती सो नियति तांको भी टिके टिके बोरिंग लागुथियो कि सर एते ना पढुचंती. ओके चलो तो कोन हला टाइडल वॉल्यूम. देन मते को कि व्हाट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. हु कैन से इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कोन? व्हाट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कोन? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कोन? नेक्स्ट क्वेश्चन को ता पर क्वेश्चन स्टूल रो कलरिंग पई कोटा इंपोर्टेंट लाइपेज ना अमाइलेज ना बाइल. ता पर को दैट इज वाटर लॉस को प्रिवेंट करिया पई हार्मोन की रेस्पोंसिबल? ऑक्सीटोसिन, भासोप्रेसिन ना एलएच ना एफएसएस. कौन हबो आंसर? सर या पर क्लास होबनी 100% हमें ट्राई करिया क्लास को पूरा तमरो एग्जाम रो 3 तारिख पर्यंत क्लास होबो हैला. 3 तारिख रात्रि रे भी हमें एठी मीट करिया. डोंट वरी. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कोन? वॉल्यूम ऑफ एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर बाय द फोर्सफुल इंस्पिरेशन. कुंथेइकरी निश्वास नबा कुंथेइकरी प्रश्वास नेले जेते एडिशनल वॉल्यूम तमे नउचो दैट इज कॉल्ड एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. वॉल्यूम एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर वी कैन इंस्पायर बाय द फोर्सफुल इंस्पिरेशन हैला. रत्नाकर श्योर.
The additional volume of air person can inspire by the forceful inspiration is called as inspiratory reserve volume. Next question tela stool color, and I janiche for the coloring of for stool bile is important, and bile generally secreted from the liver and it will store in the gallbladder. Then third question tela water loss is prevented by the hormone vasopressin. Then it next question पचारिया vasopressin generally को to synthesize हुए and को to release हुए. Vasopressin the hormone which is actually को to synthesized हुए and को to release हुए. Graceful gossip sure छाड़ी की केबे भी नहीं तमे एग्जाम दियो बढ़िया से हबो. Don't worry. चलो कौन हबो? Oxytocin and vasopressin, these two hormones actually synthesized from the hypothalamus, strictly मन रखिबो, but store and release from posterior pituitary. ये line टा important. Hypothalamus generally synthesize करिवो, posterior pituitary ताको release करिवो. Store in posterior pituitary. Sonalika perfect. Sonalika is a variety of wheat or rice. Sonalika, Kalyan, Sonar. These are the variety of semi-dwarf variety of wheat. तापर चलो रोजी वाज प्रोड्यूस्ड इन द ईयर. रोजी को कोई ईयर रे प्रोड्यूस कराइतला. रोजी रोजी गोटे कोन फ्लावर ना काओ ना डॉग. रोजी कोन गोटे? रोजी इज ए काओ, ट्रांसजेनिक काओ. और बा जो काओ रो जीन को मैनिपुलेट कराइतला टू प्रोड्यूस मोर मिल्क, टू प्रोड्यूस द मोर क्वालिटी मिल्क. 1997 and this is perfect. 1997 रे generally transgenic cow रोजी रो production. Okay, बढ़िया अछि. Next बा GMO transgenic animal are used in testing safety of polio vaccine before they can use to human beings. गोटे genetically modified जदि गोटे organism को करूचो बा जहा को हम transgenic animal कहूचे बा जहार जीन को तमे manipulate करूचे तो ह्यूमन बीइंग्स रे यूज करिया पूर्व ताको गोटे वैक्सीन सेफ्टी वैक्सीन टेस्ट करिया कोउतरे ट्रांसजेनिक काउ, ट्रांसजेनिक माइस, ट्रांसजेनिक शीप ना ट्रांसजेनिक वायरस. कोन आंसर? आंसर कोन हो? ओके ट्रांसजेनिक माइस परफेक्ट बढ़िया अछि. एइट देखिया क्वेश्चन कहले एल्युमिनियम रो ओर की एल्युमिनियम रो ओर हु कैन से. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जिया एल्युमिनियम ओर. एल्युमिनियम ओर टा को टिके पानी पी दे से टाइम रे को कोन आंसर? ओके ताले कोन हला? बॉक्साइट. चलो नेक्स्ट हाउ मेनी वेराइटी ऑफ राइस हैव बीन एस्टिमेटेड टू बी प्रेजेंट इन इंडिया. इनसेट क्वेश्चन एटा तुम छाडले स्किप करि परिबो. केते वेराइटी ऑफ राइस हैव बीन एस्टिमेटेड टू बी प्रेजेंट इन इंडिया? 20,200 2 लाख ना केते ना 20 लाख. एटा चाहिले स्किप करि परियो मो. ए डाटा क्वेश्चन पडिबोनी. ए क्वेश्चन टा देइछि दैट इज आई थिंक बोते 20,000 20,000 वेराइटी हो द आंसर हो बी हो बोते. बट एटा एते भी इंपोर्टेंट नो हला केते वेराइटी राइस पचारिबोनी एस्टिमेटेड. बट आंसर आई थिंक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 20,000. 2 लाख नो 20,000 हितो ना 2 लाख वेराइटी. The use of bioresources by the multinational company and other organization without the proper authorization from the country and the people concerned without the compensatory payment is called as. Already हमारा आंसर देइछि कोन हो? 2 लाख एमडी कोसर. अच्छा अच्छा हेइथिबो एनसीईआरटी रे आई थिंक 2 लाख हेइथिबो. मो एटा मने नै एक्चुअली 2 लाख हेइथाइ पारे. ओके ताले आंसर कोन हो? बायोपिरासी. एंड ऑलरेडी हम जानि छे बायोपिरासी. सो आंसर इज बायोपिरासी. बायोपिरासी को नेकी क्वेश्चन पचार छेला सीयूटी रे बदे पचारतला. बायोपिरासी इज आंसर. नेक्स्ट which variety of rice was patented by
US company even though the highest number of variety of this rice is found in India. जहार राइस रो वेराइटी इंडिया रे बहुत थिबा सत्वे ताको यूएस कंपनी गोटे पेटेंट नै जायतिला कि ए वेराइटी होचे हमर ताले कोन आंसर यारो मैथ क्लास कोन होउनी ब्रजेश सॉरी वर्षा मैथ क्लास तमर हबो उदित सर को मैथ क्लास हबो बोधे सर इलेक्शन में बोधे गांव को जायतिली कोन हबो तो कोन आंसर बासमती बासमती राइस रो वेराइटी जनरली इंडिया रे बहुत देखा जिवा सत्वे ताको यूएस कंपनी पेटेंट करथला द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया took what step to cater the requirement of patent terms and other emergency provisions with regard to biopiracy कोन हबो इंडियन पेटेंट बिल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट बायोपिरासी एक्ट ना आरटीआई एक्ट कोन हबो आंसर दियो इंडिया गवर्नमेंट took what step बड़ा क्वेश्चन अछि बस बिरयानी घर बिरयानी टा ए राइस बासमती राइस ओके कोन हबो दैट इज इंडियन पेटेंट बिल इंडियन पेटेंट बिल ओके चलो इंडियन पेटेंट बिल नेक्स्ट बा which Indian plants have either been patented or attempts have been made to patent them by western nations of their commercial use all of these have been targeted D hour cornel answer that is D golden rice is a variety of rice grown along with yellow river in China golden rice related a transgenic rice having gene for beta carotene wild variety of rice with yellow color grains a long stored rice having the yellow color tint कोन हबो आंसर दियो कोन आंसर golden rice is a variety of rice grown along the yellow river कोन आंसर ताले transgenic rice having the beta carotene rice with yellow color grains no that is beta carotene transgenic rice having the gene for the beta carotene C is perfect RNA interference genes are silenced using RNA interference मन पड़िस तो जो नेमाटोड मेलाडोजाइन इनकॉग्निशिया टोबैको प्लांट रो रूट को अफेक्टेड करथिला सो दैट टोबैको प्लांट रो रूट को नेमाटोड मेलाडोजाइन इनकॉग्निशिया रो बचिया पई टेक्निक अप्लाई कराइतला बा बायोटेक्नोलॉजी रो प्रोसेस अप्लाई कराइतला आरएनए इंटरफेरेंस जोतरे कि हमें सेंस आरएनए एंड एंटी सेंस आरएनए प्रोड्यूस करथिले रंजिता क्लास केते बड चरिबो क्लास आ टिके डिस्कशन करी सारिया तो सेंस और एंटी सेंस आरएनए प्रोडक्शन करथिले आ बोथ सेंस और एंटी सेंस जे कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रोडक्शन करथिला आ डबल स्टैंडर्ड आरएनए टा जनरली कोन करथिला ना एमआरएनए को साइलेंस करथिला सो दिस इज द आंसर सी द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रथम क्लिनिकल जीन थेरेपी कहा पई कराइता एड्स पई ना कैंसर पई ना सिस्टिक फाइब्रोसिस पई ना एससीआईडी सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी रिजल्टिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी कोन हबो डी इज परफेक्ट डबल स्टैंडर्ड ने बढ़िया समस्त ठीक अछि आद्यासा प्रबानी श्योर करिया क्लास हला डोंट वरिया करिया क्लास करिया 6 पर्यंत क्लास हबला 4 पिला तमे देइसला पर एग्जाम देइसला पर भी क्लास कराबो 6 पिला मन पई तो 6 पर्यंत क्लास कराबो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी होची एससीआईडी नेक्स्ट जिबा आ प्रथम जीन क्लिनिकल जीन थेरेपी मनस तो एडेनोसाइन डीएमिनेज एडीए डेफिशिएंसी हेतला गोटे 4 वर्ष रो जियो केस रे आ से जियो रो ना थिला अशांति नामक जियो 4 वर्ष रो जियो अशांति तो तारी गोटे एडेनोसाइन डीएमिनेज रो डेफिशिएंसी थिला सो जे 4 इयर्स रो अशांति नामक गर्ल रो एडेनोसाइन डीएमिनेज रो डेफिशिएंसी पई प्रथम जीन थेरेपी कराइतला चलो नेक्स्ट टॉप
to obtain the virus free healthy plants from a diseased one by the tissue culture technique, which part of the disease plant will be taken? कौन आंसर? जनरली प्लांट रो को पार्ट को हमें नेले डिजीज फ्री पाइया. apical meristem only, palisade parenchyma, both apical and axial meristem, na epidermis only. आंसर कौन हबो? दैट इज apical meristem. Apical meristem. Okay. Next, a technique of micropropagation is somatic hybridization, protoplast fusion, somatic embryogenesis, embryo rescue. Technique of micropropagation is कौन हबो? Technique of micropropagation is, ठीक है, वीडियोटा कौन आंसर? द टेक्निक ऑफ माइक्रो सोमाटिक हाइब्रिडेशन ना प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन ना कौन हबो? दैट इज आंसर इज सोमाटिक हाइब्रिडेशन. परफेक्ट. सोमाटिक हाइब्रिडेशन. चलो नेक्स्ट दिबा गोल्डन राइस रो क्वेश्चन. कहली गोल्डन राइस पचारियो माने आखि मुजी कोन? विटामिन ए. आउटब्रीडिंग इज एन इंपोर्टेंट स्ट्रेटजी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बिकॉज इट, आउटब्रीडिंग टा गोटे इंपोर्टेंट स्ट्रेटजी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बिकॉज कोन पई हमें आउटब्रीडिंग टा जनरली गोटे इंपोर्टेंट स्ट्रेटजी बोली कहूचे एनिमल ब्रीडिंग रे. ऑलरेडी हम पढी सारचे इनब्रीडिंग कोन एंड आउटब्रीडिंग टू टाइप्स, आउट क्रॉस एंड क्रॉस ब्रीडिंग. आउट क्रॉस कोन भी कहिले, क्रॉस ब्रीडिंग कोन भी कहिले. आउट क्रॉस रे सेम ब्रीड बट नो हैविंग कॉमन एंसेस्टर, क्रॉस ब्रीडिंग रे डिफरेंट ब्रीड, इनब्रीडिंग रे सेम ब्रीड. हैला कोन आंसर ताले? is useful in producing the pure line in animals, is useful to overcoming the inbreeding depression, expose the harmful to useful to overcoming the inbreeding depression. B, yeah. Okay. Expose the harmful diseases that is eliminated by cellular. Outbreeding टा कौन पाई? जनरली जो inbreeding depression बा बार तुम जदि inbreeding करोचो गोटे 4 रो 6 जनरेशन पर जदि तुम गोटे सेम ब्रीड सेही डोगरमैन भितर जदि 4 रो 6 थर तुम मीटिंग करोचो तो 4 रो 6 जनरेशन पर निहात रूपे गोटे बैड कैरेक्टर आसी पारे बा जो डिजायर कैरेक्टर पई तुम डोगरमैन को ब्रीड करोचो सेही कैरेक्टर न आसी पारे. सो इनब्रीडिंग डिप्रेशन ताको हमें कहउछे. सो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को प्रिवेंट करिया पई गोटे आउट क्रॉस कर दवा दरकार. आउट क्रॉस कोन ना सेही डोगरमैन को गोटे नो कॉमन एंसेस्टर माने यार कॉमन एंसेस्टर समान हे नथिबे ताको सब ब्रीड कर दियो जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन ता ओवरकम हे जिवो. हैला सेम डोगरमैन सेम ब्रीड बट नो कॉमन एंसेस्टर, दैट इज कॉल्ड एज आउट क्रॉस. माने जदी गोटे गान डोगरमैन भितर करछो दैट इज इनब्रीडिंग. जदी गोटे गान डोगरमैन को आउ गोटे गां चेंज कर दोछो सेही डोगरमैन ब्रीड रे गोटे गां चेंज, दैट इज कॉल्ड एज दैट इज आउट क्रॉस. आ जदी ब्रीड ही चेंज कर दोछो डोगरमैन को अल्सिशियन, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्रीडिंग. आ जदी स्पीशीज चेंज कर दोछो कुकुर को अधियास कर दोछो, कुकुर को बिलेइस कर दोछो, दैट इज कुकुर को बिलुआस कर दोछो, दैट इज स्पीशीज चेंज कर दोछो इंट्रास्पेसिफिक हाइब्रिडेशन. जार एग्जांपल होची म्यूल. ताले कोन आंसर? बी हला. ताले ए सिस्टम ऑफ रोटेटिंग क्रॉप्स विथ लेगुम और ग्रास पोस्टर टू इंप्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी इज कॉल्ड एज ले फार्मिंग, स्ट्री फार्मिंग, कंटूर फार्मिंग ना शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. कौन हबो? सस्मिता क्लास सॉरी बे. रोटेटिंग क्रॉप्स आई थिंक ले फार्मिंग बोले हबो. रोटेटिंग क्रॉप्स रे ले फार्मिंग, आई होप ले फार्मिंग हबो. क्रॉप रोटेशन जो तरे की करियो माने दैट इज ले फार्मिंग हबो ना. आई होप ले फार्मिंग. फिर भी देखि दो ले फार्मिंग लागुछ तो. You are given tissue its potential for the differentiation in artificial culture. What is the following hormone would you add to the medium? गोटे टिश्यू कल्चर रे तुम जनरली हम जानि छे टिश्यू कल्चर रे कोन करा जिवो ना गोटे मीडियम निया जिवो जो मीडियम रे न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन्स गुडा पका जिवो. को हार्मोन मेनली दिया जाय? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ऑक्सिन एब्सिसिक एसिड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी को हार्मोन दिया जिवो?
को हार्मोन टा जनरली दिया जिवो ऑक्सिन आउ ए ऑक्सिन आउ साइटोकाइन इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडेशन इज द मेटिंग ऑफ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडेशन जनरली का भीतर तो मेटिंग करबो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडेशन इज द मेटिंग ऑफ कोन आंसर हम ऑलरेडी हम कहली टोटल पूरा स्पेसीज चेंज कर दबो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडेशन रे टू डिफरेंट रिलेटेड स्पेसीज सुपीरियर मेल एंड फीमेल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड तो नो दैट इज स्पेसीज ही चेंज करिवो मोर क्लोज रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड भूल एनिमल्स विद द सेम ब्रीड विथ नाउ एनिमल विथ द सेम ब्रीड विथ कॉमन एंसेस्टर हैविंग कॉमन एंसेस्टर होची इनब्रीडिंग मोर क्लोज रिलेटेड इंडिविजुअल्स विथ द सेम ब्रीड रे इनब्रीडिंग जीवो सुपर मेल तो डिफरेंट ब्रीड होची कोन जीवो डिफरेंट ब्रीड हेले दैट इज outcross and crossbreeding eta crossbreeding and two different related species is answer A is perfect hela A next jiba among the following edible fishes which one is marine fish having rich source of omega 3 ne ki ko fish ta generally high source of omega 3 kon hobo सर मु ओयूटर क्रैश कोर्स करथिली ओके सस्मिता देखो भल से पढ़ो एंड टू जो एग्जाम तुम दियो जदी किसी प्रॉब्लम होची देन जदी भल से माइनरली प्रिपरेशन करिया अछि एनी गोटे कॉलेज रे ग्रेजुएशन एडमिशन कर दियो देन आसो विद्यासागर रे जॉइन करो कहिबी तो मैंग्रोव मैक्रेल मृगल ना मेस्टस कोन हबो मैक्रेल आई थिंक सी मैक्रेल चलो नेक्स्ट the chances of containing bad flu from a properly cooked above 100 degree celsius chicken and egg are generally bad flu virus यदि हेतिवो आ हमें चिकन को 100 डिग्री सेल्सियस रे हमें हीट करे दवा चिकन आ अंडा को chances of contacting bad flu from a properly cooked तो गोटे प्रॉपर्ली हम जदि कुक करिया 100 डिग्री सेल्सियस ऊपर चिकन और एग को जदि पूरा प्रबल जोर गरम करिया तो ये जो बैड फ्लू टा कांटेक्ट होबार चांसेस टा कोन लेस ना वेरी हाई ना मॉडरेट टा नॉन दैट इज सी मॉडरेट होबा मॉडरेट हला सी पूरा तो नॉन कहि पेरेनी मॉडरेट चलो नेक्स्ट ए ग्रुप ऑफ एनिमल which are related by the descent and share many similarity are referred to as generally group of animals जो मानकर होची commonly माने similar shape थिबो similar property थिबो similar habitat थिबो तो एमानु को हम generally कोन कहूची गोटे breed what is breed that is a group of animals so that is जदि तमे species no breed या according to NCERT जदि तमे मेले that is boy देखिबो so breed होचे group of animals generally जहार similar size similar property similar shape तो ताको हम generally गोटे breed बोली धरा जाय हैला breed या जेंति डोगर माने गोटे breed सब डोगर माने कर shape गोटे टाइप रो property गोटे टाइप रो similar गोटे alsatian गोटे breed तो एई टाइप रो inbreeding is carried out in animals husbandry because it improves the breed increase the homozygosity increase the vigor increase the heterozygosity inbreeding is carried out in animals husbandry because increased homozygosity Sonalika and Kalyan Sona are the variety of Sonalika and Kalyan Sola are the variety of Sonalika and Kalyan Sona are the variety of wheat राइस रो वेराइटी हम पढिचे जया रतना कि ना टबाको जे एटा मन अछि तो टबाको प्लांट को नेमाटोडा जनरली अफेक्टेड करथिला आरएनए इंटरफेरेंस रे मते कहलो टबाको प्लांट रो जनरली जो नेमाटोडा अफेक्ट करथिला से नेमाटोड ना कोन से नेमाटोड ना कोन जी हो जनरली टबाको प्लांट को अफेक्टेड करथिला कोन आंसर ब्लर आछि की बीएससी माइक्रोबायोलॉजी रे बीएससी करियो माने
तो एंट्रेंस कोन एनी ग्रेजुएशन कोर्स रे तो ही परिबो कोन आंसर नेमाटोड होची मेलाडोजाइन इनकॉग्निसिया मेलाडोजाइन इनकॉग्निसिया चलो नेक्स्ट जीवा which one of the following is not a fungal disease कोटा गोटे फंगल डिजीज नुह रस्ट ऑफ व्हीट ब्लैक रट ऑफ क्रूसीफोर्स आसीबो तो ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट रेड रट ऑफ सुगर केन लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो एटा सब कोन ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट रेड रट ऑफ सुगर केन लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये होची सब फंगल डिजीज बट ब्लैक रट ऑफ क्रूसीफोर्स इज ए बैक्टीरियल डिजीज ऑलरेडी क्वेश्चन हम करिचे ब्लैक रट ऑफ क्रूसीफोर्स इज ए बैक्टीरियल डिजीज हला स्मॉट को फंगी फाइको ना आस्को ना बैसिडो ना ड्यूटेरो एबे कहितले को तो कोन हबो फाइको ना आस्को ना बैसिडो ना ड्यूटेरो स्मॉटा कोन बैसिडो मनस थिबो बढ़िया बैसिडो माइसिडिस होची स्मॉट नेक्स्ट चलो इन वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स द मेरिस्टेम टिश्यू इन बोथ apical and axillary buds are free of virus because in virus infected plant रे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टा जनरली बोथ apical and axillary are free of virus तो सेटा कोन हबो गोटे क्वेश्चन मन पड़ुची मोर कला बेला प्रीवियस गोटे क्वेश्चन छाड़ी रहले मन अच्छी गोटे भाइरस फ्री कोठु पाइया सेठी बोधे मु मारली apical मेरिस्टेम बट आंसर होची कोन भाइरस फ्री प्लांट रो को पार्ट रे भाइरस फ्री पाइया दैट इज बोथ apical और axillary बॉड होबो सेटा आई थिंक मु apical मेरिस्टेम मारली बोधे बट भाइरस इन्फेक्टेड प्लांट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन बोथ apical and axillary buds are free of virus because the dividing cells are virus resistant meristems have antiviral compounds the cell division of the meristematic tissue are faster than the rate of viral multiplication viral रो multiplication थारो बहुत speedily that is divide करा होची meristematic तार आंसर कोन हबो yes गायत्री that is both हबो हां ठीक एमडी कौशल that is by mistakenly मु apical meristem बोधे मारली मन थिला okay that is both apical and axillary bud काहे कि apical और axillary bud ले जनरली भाइरस ता एते जल्दी इन्फेक्टेड होइने बा भाइरस फ्री मिले एति पई बिकॉज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रो जो सेल टा डिवीजन हुए बहुत फास्टर देन द रेट ऑफ वायरल मल्टीप्लिकेशन चलो सेवरल साउथ इंडिया स्टेट्स रेज द 2 to 3 crops of rice annually the agronomic feature that makes the possible is because of shorter rice plant yearly छाड़ दियो एटा की which one of the following combination would a sugarcane farmer look for the sugarcane crop गोटे sugarcane रो फार्मर जनरली गोटे sugarcane पई को प्रॉपर्टी तार रहे दरकार गोटे sugarcane रो थिक स्टेम हाई सुगर कंटेंट प्रोफ्यूज फ्लावरिंग थिक स्टेम शॉर्ट इंटरनोड तो केबे न रहले भलो जेते आकोटा बड़ होबो सेते भलो लॉन्ग इंटरनोड रे दरकार थिकर स्टेम दरकार हाई सुगर कंटेंट ना डिजीज रेजिस्टेंस रे दरकार ए एटा जेनेटिक इंजीनियरिंग दैट इज तमे कोथरे जेनेटिक इंजीनियरिंग करे को चाहो छ माने प्राइवेट या गवर्नमेंट 8 नंबर ए हला बढ़िया fungicides and antibiotics are chemicals that eta was the last question oh eta last fungicide and antibiotics are chemicals that fungicide और antibiotics जो chemicals उडा रहले जनरली माने कोन करती chemicals that enhance the yield and the disease resistance kill the pathogenic fungi and the bacteria respectively kill all pathogen microbes कोन हबो kill pathogenic fungicide used for the killing of fungi and the antibiotics is used for the killing of bacteria so both fungi or bacteria respectively and B is correct next use of certain chemicals and the radiation to change the base sequence of a gene of crop plants is termed as recombinant DNA technology eta last question na mutation breeding na gene therapy use of certain chemicals and radiation to change the base sequence of a gene of crops plant is termed as recombinant DNA technology transgenic mechanism
म्यूटेशन ब्रीडिंग ना जीन थेरापी कौन हम म्यूटेशन ब्रीडिंग ना ट्रांसजेनिक मेकानिज्म म्यूटेशन ब्रीडिंग कहीं हम म्यूटेशन ब्रीडिंग चलो नेक्स्ट the scientific process by which crop plants are enriched with certain desirable nutrient is called as the scientific process by which crop plants are enriched with certain desirable characters कौन होबो crop protection bio-fortification ना breeding ना bio-remediation कौन होबो हम जानि ऑलरेडी bio-fortification next the term totipotency refers to the capacity of totipotency refers to the capacity of कौन होबो cell to generate whole plant bud to generate whole plant cell to enlarge in size seed to germinate totipotency cell to generate whole plant ना bud to generate whole plant ना seed to germinate कौन होबो sorry cell to generate whole plant next given below are few statements regarding somatic hybridization question कौन होबो ना protoplasm of different cells of the same plants are fused homework एटा तम पे रहिला होमवर्क करिवो आ क्वेश्चन आई थिंक नाही सो एटा तम पे होमवर्क एंड निहात रूपे होमवर्क तम दबो मु देखुची प्राय पिलांगर कमेंट देखुची प्रीवियस क्लास रे बहुत सारा पिला भी कमेंट देथिले जेमति कि लिपिका एंड केतरा पिला थिले ओके तो बाकी रहिला ई रहिला होची तमरो आज रे सेशन बाकी आई होप तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ठीक इजी हेतिबो तो निहाती हमें जो काली सेशन करिया तो काली सेशन रे ट्राई करिया दैट इज ओयूट रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आनिया पई हैला तो गोटे सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आनिया काली रो डिस्कशन रे ट्राई करिया एंड नेक्स्ट क्लास रे आउ गोटे सेशन आनिया तो ई बेला हमें चलीबा सो एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू कि तुम माने एते समय टाइम देला एंड भलसे पढला आई होप तुम कोठी ना कोठी प्रिपरेशन रे इजी होबो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो लास्ट मोमेंट तो जोडा पढिছো ताकू ही रिवीजन करो नुवा चैप्टर को अधिक माइंड खेला होनी जो जिंस तर छाड़ दे जो चैप्टर को छाड़ पछे बट नुवा जिंस पढिया पे एति कि न ट्राई करी कि जो जिंस पढिছো ताकू टिके सेति तार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आ बास्ट रहला एग्जाम रे तुमको 200 टा क्वेश्चन को 120 मिनिट रे करिया अछि जम्मा क्वेश्चन को गोटे क्वेश्चन रे स्टिकी हेकि रहइबनी एटा होची तुम पई पूरा गोल्डन रूल गोटे क्वेश्चन रे केबे स्टिकी हेकि रहिबो नाही बस क्वेश्चन को स्किप करो आगु चलो डल टुका मारो ढाबा मारो चलिबो गायत्री दीपांजलि जस्मिन अर्चिता एंड प्रभात क्यूटी हरप्रिया जयंती सोनालिका कल्याण सोना जगन्नाथ शाश्वती पायल ना ना एटा लास्ट क्लास नो पतित पावन इंदु एंड समस्त नाम मोर मन अछि दैट इज सब थैंक यू अंकिता अर्चिता बाकी समस्त नाम मोर मन रही गेलानी शिवानी सिप्रा संजुला ऑनलाइन स्टूडेंट नंबर शिवप्रसाद महेश पुरुषोत्तम पायल शुभंकर सरोज ओके थैंक यू सुपब्रा चिन्मय लिप्सा केदारनाथ बढ़िया जाओ एकदम लास्ट टाइम में जॉइन कलो अननोन आरके गायत्री तो तमरो लास्ट मोमेंट रे टुक्का मारिया ट्रिक भगवान को ना धरी मारिया कोन करिया सेमिति टुक्का मारिया ट्रिक यदि दी दीटा ऑप्शन तमे कटई पारुचो कि ए ऑप्शन होबनी से ऑप्शन होबनी ता भीतर मारिबो टुक्का मारिबो कोन ता जे ट्रिक हम केन को करिया कहलो हला काली केतोल क्लास करे 6 टा उदे 6 टा कि 7 टा जागट होबो हला 6 टा 7 टा हला लॉर्ड बालाजी ओके तो ये रहला तमरो क्लास आ बाकी तमरो डिटेल्स वीडियो दैट इज एग्जाम टाइम रे तुम केमती सतर्कता से करियार अछि ता रिगार्डिंग रे म जोडे वीडियो बनै छै एंड से वीडियो को अपलोड करबी तो अबे जे विद्यासागर क्लासेस रे वीडियो सेक्शन रे तुम राति सुधा वीडियो पाइ जिबा एंड वीडियो को टिके देखि दबो यदि टाइम पाइबो तो निहात रूपे देखो चलो हला एंड थैंक यू इट्स ओम देवस्मिता जयंती
अलिभा, कान्हा, प्रभात, विजयंती, विजयलक्ष्मी, जगन्नाथ, प्रत्युष, पुरुषोत्तम, सीड्स म्यूजिक, अर्पिता, प्रत्युष, तृप्तिमयी, शिवानी, ओके महेश, चलो ओके बाय, श्रद्धा किट्टू, संजुला सर 150, एमडी कौशर, कान्हा, अर्पिता, अंकिता, पुरुषोत्तम, चलो ओके बाय, शिव प्रसाद, चलो ओके तरुण।